chapter Carbon and its Compound from class 10. Now till the last lecture we have discussed about the hydrocarbons, the saturated and unsaturated compounds. Now in this lecture we are going to discuss the homologous series and the nomenclature of carbon and its compound. So let's start. Actually, our first topic is homologous series. Now what is this homologous series? Homologous series is actually the series of compounds in which the difference between two successive compounds is CH2 unit. So only CH2 unit is the difference, right? Like, just recall the series of alkane. What we have written for the alkane? First member is CH4, that is methane. Second is C2H6. Third is C3H8. Next is C4H10. Then C5H12 and so on. Now when we are coming to alkene, then also the first member is what? Ethene, not the C1. Carbon 2 से शुरू होता है ना alkene. So we write here C2H4. Next is C3H6, C4H8, C5H10, C6H12. H2. Now for the alkyne. For alkyne, what we are supposed to write? All the members. CH, C2H2. It will again start with carbon number 2 because alkene is C triple bond C. So for the formation of double or triple bond, we need at least 2 carbon atoms. So it is C2H2. Then C3H4, C4H6, C5H8, C6H10 and so on. So what is common in all these series? The common thing is the difference between two successive members. Just after this, two successive members, the difference between CH4 and C2H6 is what? CH2. In the last lecture I told you कि यहाँ पे जो CH2 का difference है उसको ध्यान में रखना है आप लोगों को. यहाँ जो लगातार के दो मेंबर है उनके बीच का difference कितना हो रहा है? CH2. एक कार्बन बढ़ रहा है, दो हाइड्रोजन बढ़ रहा है. Similarly, here also it is CH2. यहाँ पे देखो alkyne में it's CH2, then CH2, CH2 like this. Here also, if we observe here, it is also the difference of CH2 unit. So we can see the series of alkane, alkene and alkyne. There is difference of CH2 unit in two successive members. First member और second member के बीच में CH2 का difference है. Second से third में CH2 का difference है. So this is nothing but the homologous series. So how can we define the homologous series? We can say the series of compounds in which the difference between two successive members is of CH2 unit is called as homologous series. And you can give this as example. Okay? Now I am just writing the definition of homologous series. I think you have understood it. This is actually the example. Just see here. Then I am going to just write the definition. So for the definition, one can write the series of carbon compounds in which the difference of two successive members is of CH2 unit
और यहाँ पे ये माइनस का साइन नहीं है, ध्यान देना, दिस इज फॉर द बॉन्ड, ठीक है, किसी न किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, इसलिए लाइक दिस हाइफन CH2 unit. So this is actually the homologous series. So the series of carbon compound in which the difference between two successive members is of CH2 unit, that is called as homologous series. And this is example. You can write any example of alkane, any example of alkene, and any example of alkyne. Right? So this is the homologous series. Now this is very important because exam में कई बार ये पूछा गया है कि homologous series क्या है, what is the example. Even in your NCERT exercise also it is given as one of the question that what is homologous series. Clear? Now moving towards the next topic, that is functional group. So what is this functional group? Functional group क्या होता है देखो. Functional group is actually a group of compound or a group of atom which change the property of a given compound. मतलब ऐसा ग्रुप जो किसी भी ग्रुप के साथ ऐड हो जाए और उसके पूरे प्रॉपर्टी को बदल दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द फंक्शनल ग्रुप. होपफुली सब लोग लिख लिए होंगे डेफिनेशन. कॉपी द डेफिनेशन. Okay, I'm just removing it. So next is actually the functional group. So for the definition, what we can write? The group of atoms, we can say, which get attached to any compound and changes its properties are called as functional group. मीन्स किसी भी ग्रुप के साथ अटैच करने के बाद उसके पूरी प्रॉपर्टी को जो चेंज करते, वैसे ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल वी कैन राइट हियर फिनॉल, एल्डिहाइड. For in your standard phenol you don't have to read, so just write alcohol or aldehyde or ketone or carboxylic acid, like this. There are many more functional groups. Okay, table is given in your NCERT. There you can see some of the functional group. One more is given there, that is X, which is called as halogen. ठीक है, halogen is actually group 17 elements. When we go to the next chapter, that is periodic table or periodic classification of elements, in that chapter we got to know about group 17 elements which are called as halogens. So X are actually chlorine, bromine, iodine, etc. So these are also one of the functional group. Now I'm just taking one of the example to make you understood what is functional group. Just take carboxylic acid. क्यों इसको फंक्शनल ग्रुप बोल रहे हैं या कैसे इसका डेफिनेशन लगे, इसका डेफिनेशन करेक्ट है कि नहीं, इसको कैसे समझेंगे. आई एम जस्ट टेकिंग वन ऑफ द कंपाउंड CH3, CH2, or we can write C2H6 written C2H6 3. CH3 I have taken this compound. Clear? If I will make the bond structure, definitely what I told you earlier, कि एक कार्बन के 4 एटम अटैच होंगे एक कार्बन से, तो इस तरीके से इस कार्बन से 3 हो जाए, इस कार्बन से 3 हो जाए. ओके, ये एक कंपाउंड है C2H6 है, इसी को मैंने CH3 के फॉर्म में लिखा है. दिस इज एल्केन बिकॉज ऑल आर सिंगली बॉन्डेड, सो दिस इज एल्केन. राइट नाउ आई एम जस्ट रिमूविंग वन ऑफ द हाइड्रोजन and I am just adding CO or
don't just take carboxyl, this is somewhat confusing. So I'm just taking aldehyde. अभी aldehyde लेते हैं. Okay. So aldehyde group is actually CHO group. CHO is aldehyde. Clear? So what I did, I just remove one of the hydrogen atom and I add one CHO unit. Or if we don't want to increase the number of carbon, what we do, we just add. Okay, automatically it becomes a aldehyde group. C double bond O, single bond H. This is the aldehyde. So we have to remove one more carbon, one hydrogen from here because यहाँ 5 बॉन्ड बन गया था. मैंने क्या बोला कि कार्बन का हमेशा 4 ही बॉन्ड बनना है, 1 2 3 4. 5वां बना, उसको डिलीट कर दें. सो क्या हुआ, पहले ये क्या था एल्केन, अब ये क्या बन गया एल्डिहाइड, क्योंकि इसके लास्ट में CHO ग्रुप ऐड हो गया. अब ऐसा नहीं कि लास्ट में ही, फंक्शनल ग्रुप हम लोग पूरे कंपाउंड में कहीं भी ऐड कर सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं. ठीक है. लाइक इफ यू वांट टू ऐड अल्कोहल, एक कंपाउंड हमने लिखा, सारे कार्बन के 4 बॉन्ड बना देंगे. इस तरीके से हमने सारे कार्बन के 4 बॉन्ड बना लिया. ठीक है. अब मैंने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन लूंगा, यहाँ और इस कर दिया. तो ये क्या है, ये भी एल्केन था बिकॉज ऑल आर सिंगली बॉन्डेड. दिस इज एल्केन. इफ आई पुट वन ऑइल इट बिकम अल्कोहल. सो दिस इज एक्चुअली द फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. इसकी सारी प्रॉपर्टी चेंज करेगी. पहले ये एल्केन की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, अल्कोहल की तरह. सो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड में अगर हम एक चीज ऐड कर दें, ग्रुप ऑफ एटम को ऐड कर दें, तो उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. और उसी को, उस ग्रुप को जिसकी वजह से प्रॉपर्टी में चेंजेस आए हैं, दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप. सो इन योर NCERT there are only 4 or 5 functional group which you are supposed to read, and that we have to see only. Clear? Now along with these alcohol, aldehyde, ketone, carboxylase and halogens, along with that we are having many more functional groups like ester, ether, okay, phenol. There are so many functional groups, but that you read in your higher classes. So I am just making a chart to make you understand the functional group which you have to study, and the group that gets attached, the group of atom that defines the property of that specific functional group. So let's see here. यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप. यहाँ लिखते हैं symbol, we can say how we can symbolize it. So first of all, alcohol. So for alcohol we used to write OH, and next is aldehyde. For this we used to write CHO. Then next is ketone. This is C double bond O. Then carboxylic acid. For this we write C double bond O, single bond OH. COOH is actually the carboxylic acid. And last one is halogens, which are symbolized by X. This can be Cl, Br and R. Now what is the prefix for these functional groups? Prefix का मतलब क्या? अगर जैसे मैंने बोला कि एल्केन में हमने अगर ऐड कर दिया अल्कोहल को या फिनॉल को, तो उसको फिर हम अल्कोहल बोलने लगे, तो उसको कुछ ना कुछ नाम लिखते हैं हम लोग. ठीक है. तो नाम लिखते टाइम जो वर्ड हम ऐड करेंगे, अगर ये फंक्शनल ग्रुप है, अगर अल्कोहल है तो क्या ऐड करेंगे, अगर ये है तो क्या ऐड करेंगे, ये है तो
क्या ऐड करेंगे, उसके नेम में हम क्या एक्स्ट्रा, उस एल्केन के या उस एल्कीन के नाम में हम क्या एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स. तो व्हाट प्रीफिक्स वी यूज फॉर द अल्कोहल, वी यूज और. नाम लिख दिया, फिर एंड में उसके ओ और एल लगा दिया, लाइक मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल. अभी जानेंगे धीरे धीरे ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये ब्यूटेनॉल क्या है, इथेनॉल क्या है, ठीक है, ये सब अभी बात होगी. ठीक. सेकेंड इज फॉर द CHO वी राइट अल, AL, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, लाइक दिस. देन फॉर दिस ketone we write on. Pronounce it as on, write it as one. One लिखते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन से क्या होगा, on. So it is propanol, butanol, pentanol. Then this, for this carboxylic acid we used to write oic acid. Oic acid, propanoic acid, phenoic acid, butanoic acid, like this. And this is for Cl we used to write chloro. For Br we used to write bromo. And for I we used to write I2. Clear? So this is about the functional group. So functional group is the group of atom which get attached to any compound and changes its properties, called as functional group. These are the examples: alcohol, aldehyde, ketone, carboxylic acid, halogens. These are the symbols or the group which gets attached to that specific element. And here we have written the prefix. For alcohol, we used to write all at the end of the name of the compound. For aldehyde, we used to write al. For ketone, we used to write ol. For carboxylic acid, oic acid. And for halogens, we used to write chloro, bromo, ido, like that. Clear? So just write these things. These are very important, so just make note of these things. Just write down these things. Now after this homologous series and functional group, we are going to just name the compound, just giving the name of the compound. How we call it? फॉर्मूला तो नहीं बोलेंगे, कुछ ना कुछ उसका नाम होगा जिसके बेसिस पे हम उसको कॉल करते हैं, राइट? सबका नाम होता है, तो कंपाउंड के भी नाम होंगे. अब ये नाम जो होगा उसका कुछ ना कुछ रूल होता है, कुछ रूल के तहत हम उसका नेमिंग करते हैं, ठीक है? एंड उस रूल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर. ओके, द सिस्टम ऑफ गिविंग द नेम ऑफ carbon and its compound is called as nomenclature.